Hare
Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivaradhari. Jai Radha Madhava, Jayo Kunja Vihari, Jayo Gopi Jana Vallabha, Girivaradhari. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Girivaradhari. Jayo Radha Madhava, Jayo Kunja Vihari, Jayo Gopi Jana Vallabha, Jayo Girivaradhari. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna
Hare Krishna. So, a very warm welcome to all of you for today's session on the Srimad Bhagavatam. We'll start our session with the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nashtiki. So in our previous session we discussed Maitreya Rishi. Mahatma Vidur is asking Maitreya Rishi about how Lord Brahma creates this material energy, and then he asks about the eternal time element. And then we discussed that this material creation is separated from the Lord because of the time factor, Kala Shakti, the time factor. And time factor is like a recorder. We discussed the example of a tape recorder. Just like all of you watch recordings of our sessions, isn't it? Many of you watch recordings. So now when you are watching recording, actually you are listening to me only, but at a different time. Now it's not that I'm live at that time, but the effect will be the same, isn't it? So time factor is like that. It's a energy of the Lord which records everything in this material creation. And just like my voice is situated in the recording, as it is similarly, everything is situated on the time element in this material creation. And then Maitreya Rishi talks about the eternality of this material creation because of the time factor. Now today we'll begin our discussion with text 14, Shloka number 14 of the 10th chapter of the 3rd Canto of Srimad Bhagavatam. Sargo navavidhastasya prakrito vaikritastu yaha kala dravya gunairasya trividha pratisankramaha. Sargo navavidhastasya prakrito vaikritastu yaha kala dravya gunairasya trividha pratisankramaha. Translation: there are 9 different kinds of creations besides the one which naturally occurs due to the interaction of the modes. There are 3 kinds of annihilations due to eternal time: the material elements and the quality of one's work. Now Maitreya Rishi is talking about Sarga and Visarga and Pralay. So Sarga is the primary creation, the original creation, which is done by the Supreme Lord when he creates this whole material energy. We'll discuss in the next few shlokas about how these creations take place. So the first creation is by the Lord, and after that, so that is called Sarga. The creation by the Lord is called Sarga. And then the secondary creation, or the creation after Sarga, which is done by Lord Brahma, it is called Visarga. So here in this shloka, you see, Maitreya Rishi is saying, Sargo navavidhas tasya prakrito vaikritastu yaha.
So sargo navavidhas. So there are 9 kinds of sarga. Sarga means when the Lord creates this material energy, after that there are 9 kinds or 9 levels of creations. Navavidhas tasya. Navavidhas means there are 9 kinds of or 9 elements of material creation. Then prakrito vaikritastu yaha. Prakrit and vaikrit, these 2 words are used here. So prakrit means prakriti, material nature. Because of prakriti, these creations take place. And along with prakriti, Vaikritas means the modes, the 3 modes. So Prakrito and Vaikritas. So Prakriti and the 3 modes are responsible for these 9 levels of creations. And then it is mentioned Kala Dravya Gunairasya. The eternal time. Kala means Kala Shakti, the eternal time. Dravya, we discussed about eternal time in the previous session. Then Dravya means the material elements. Gunair means the 3 modes. So by the interaction of these 3, time, material elements, and the 3 modes, Trividha Pratisankramaha. Trividha Pratisankramaha. There are 3 kinds of destruction. Sankrama means destruction. So there are 9 levels of creation and there are 3 levels of destruction. Right? So the first destruction is because of when the whole universe gets destroyed. That is the end of the lifetime of Lord Brahma. Then the second is temporary dissolution of the universe, which we discussed in this chapter and in the previous chapter, when there is end of the day of Lord Brahma. So at that time, there is secondary destruction, or you can say partial destruction of the universe. It's not complete destruction, it's partial destruction. So that is the second level of destruction. And the third level of destruction is when, due to our action and reactions, the living entities, they die. Right? So that is the third level of destruction. So these are the 3 levels of destruction. Now, what are the different creations which take place? That we will be discussing. The 9 kinds of creations now we will be discussing in the next few shlokas. That what are the 9 levels of creation? We have already discussed it in the previous chapters, but again there is revision of that will happen now. We discussed that how in the beginning there is Mahat Tattva, and then there is agitation by the time element, then the 3 modes, and after that how different levels, first the sound element enters, and then the different senses along with the sound element, the shabda or the speech, the sense of hearing gets generated, right? Then we discussed, and at these different levels of creations, these all different levels of creation take place by the glance of Lord Vishnu. So at every level there is glance or there is intervention by Lord Vishnu, and that's how this whole creation, these different levels of creation take place, and at every level there is interference of the Lord. So we have discussed this in the previous chapters also. Now here we'll discuss it in a nutshell, these 9 levels of creation. So text 15, shloka number 15. Adyastu mahatah sargo guna vaishamyamatmanah vidiyastu aham yatra dravya jnana kriyodayah.
आद्यस्तु महतः सर्गो गुणवैषम्यमात्मनः द्वितीयस्त्वहमो यत्र द्रव्यज्ञानक्रियोदयः. Translation. Of the nine creations, the first one is the creation of the Mahat Tattva, or the sum total of the material ingredients, wherein the modes interact due to the presence of the Supreme Lord. In the second, the false ego is generated in which the material ingredients, material knowledge, and material activities arise. Now you see, the classification of these 9 levels of creation is now will be given by Maitreya Rishi in these upcoming shlokas. So in this shloka, he is saying that Adyastu Mahatah Sargo. Adyas means in the beginning. The first level of creation is where Mahatah. Mahat means the whole material, all the material ingredients combined together. The combination of all material ingredients. So Sargo. So this primary creation is the creation of all the material ingredients, the sum total of all material ingredients. And they, you see, Guna Vaishamya Matmanaha. Guna. Guna means the three modes. So these material ingredients, they interact with the three modes. And how they interact? Vaishamya Matmanaha. Guna Vaishamya means the interaction with the three modes of these material ingredients. Atmanaha. Atmana means because of Paramatma, the Supreme Lord. Dvitiyastu Fahamo Yatra. And after these material ingredients are created, then the second creation or the second level of creation is when Aham. Aham means Ahankar or false ego gets generated. Dravya Jnana Kriyodaya. And when this false ego is generated, then Dravya. Dravya means the material ingredients. Gyan means material knowledge. And Kriyodaya, Kriya, material activities, they also begin with the creation of this false ego. So all the material ingredients are put together. There is a dark region which is created in the spiritual sky or Brahma Jyoti, where all the material ingredients are put together by the Supreme Lord. And then under the supervision of the Supreme Lord, all these material ingredients start interacting with the three modes. And because of these three modes, the three gunas, Sattva gun, Rajogun, Tamogun, these three modes are responsible for a living entity to believe that his body is made of material elements. We are identifying with this body. We are thinking that I am this body because of interaction with the three modes. Right? So these three modes create a living symptom within the body.
Although this body is dead, body has got no power, no strength, nothing. It is all because of the soul. But this tendency that we think that this body is the source of strength and power and everything, that artificial illusion is created because of the three modes. Sattva guna, Rajoguna, Tamoguna. These three modes, when they interact with the material ingredients, they create life-like experience in this body. Although this body has no experience, no life, but that life-like feeling is generated in the living entity because of the interaction of the three modes with the material ingredients. Then after that, what happens? False identification gets created. Now, what is identification? Identification means to think who you are. So in our original state, we know that I am not this body, I am a spirit soul, I am a part and parcel of Krishna. That is our original identity. Right? Our original identity is I am not this body, I am a spirit soul, and I am a part and parcel of Krishna. But when the material creation takes place, and when the living entity enters into this material nature, his original identification gets contaminated, and that original identification gets converted into false identification. Original identification is called real ego. Real ego means Krishna conscious ego, that I am a part and parcel of Krishna, I am a lover of Krishna. So that is our original ego. But as soon as the living entity comes in touch with matter, just like milk gets converted into curd, yogurt, milk, when it is touched by a particular chemical, it gets converted into curd. Similarly, our original consciousness, which is Krishna consciousness, because of the influence of false ego, it gets converted into material consciousness. So our original identification gets converted into false identification. And that is called false ego. Our false identification, we start identifying with this body, which we are not. We are a spirit soul, part and parcel of Krishna. That is our original identity. Our original knowledge is that. But our original knowledge gets transformed into false knowledge, false identification, false ego. So the root cause of material existence of a living entity is false ego. Right? And then Dravya Jnana Kriya. Dravya means, now because we are identifying with this material body, so the material body gets created. Dravya means this material body, it gets created. Then Gyan, then Dravya Gyan means material knowledge gets created. So because we are identifying with this body, we start thinking I'm an Indian, I'm an American, I'm a Hindu, I'm a Muslim, I'm a Christian, I'm this, I'm that. So all these different identities, these are called material identities with this material body. So our original identity gets converted into, because of false ego, it gets converted into material identity. So that is called Gyan, that is called material Gyan. What is our original Gyan? That I am not this body, I am a spirit soul, I am part and parcel of Krishna, I am a loving servant of Krishna. That is our original knowledge. But that knowledge gets covered because of material identification, because of false ego. And then this material knowledge gets generated because of the three modes and this material energy. Right? And because now we have material knowledge, we think I am this body is working. So Kriya, then we start working materially.
material work gets generated because of that, right? So this all happens in the second level of creation. So in this shloka, we covered two levels. First level is when the material energy with material ingredients and the three modes are created, and then because of the false ego, the second level of creation takes place. Now let us see what is the third and fourth level of creation. Text 16, shloka number 16. भूत सर्गस्तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्य शक्तिमान चतुर्थ ऐन्द्रिय सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मकः भूत सर्गस्तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्य शक्तिमान चतुर्थ ऐन्द्रिय सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मकः. Translation: the sense perceptions are created in the third creation, and from these the elements are generated. The fourth creation is the creation of knowledge and of working capacity. Now you see. So now once we develop, in the previous shloka, what did we discuss? That material knowledge, material body, false identification, false ego, all these are creations of the second level. Then this third level happens. What is that? Bhuta sarga tritiyastu. Bhuta sarga means after material creation. Tritiyastu, then the third level of creation takes place, where tanmatro dravya shaktiman. Dravya shakti, the material elements, our identification with the material elements. Then Chaturtha Andriya Sargo, then the fourth level of creation is Jnana Kriya. Jnanendriyas and Karmendriyas. Right. So because of our material knowledge, our sense perceptions, material working capacity, that happens. So this is the fourth level of creation, the third and fourth level of creation. So Dravya Shakti and Jnana Kriya, right? So this happens by the in the third and fourth level of creation. Then text 17, shloka number 17. Vaikariko deva sargaha panchamo yanmayam manaha shashtastu tamasa sargo yasva buddhi kritah pamoho. Vaikariko deva sargaha panchamo yanmayam manaha shashtastu tamasa sargo yasva buddhi kritah pramoho. Translation: the fifth creation is that of the controlling deities by the interaction of the mode of goodness, of which mind is the sum total. The sixth creation is the ignorant darkness of the living entity by which the master acts as a fool. Now you see. Now we are talking about the sixth and seventh level, the fifth and sixth level of creation. So what is Maitreya Rishi saying here? Vaikariko deva sargaha. Deva sarga means the creation of the devatas, controlling deities. Because once the living entity develops material knowledge, then some living entities become controllers and some living entities become controlled. The controller living entities are called devatas, and the controlled living entities are all the other living entities. So, panchomo yan mayam manaha. So, by the interaction of the mind and the mode of goodness, this creation takes place, the pancham or the fifth creation. And shashtastu tamasa sargo yastu buddhi kritah prabhoho. Then after that, the tamasaha sargo means the
darkness or the ignorance by which the living entity gets covered, that creation takes place. Right? And because of that, buddhi kritaha prabhu, the living entity starts acting as false master. So devatas are those living entities who generally are devotees of the Lord. Devatas means those who are devotees. Vishnu bhakta bhaved daiva asuras tadviparyayaha. And then so those who are devotees of the Lord, they are called devatas, and those who are non-devotees, they are called asuras or demons. So different demigods, they are controllers of our different sense organs. Just like eye is controlled by light, because without light, eyes cannot function. And light is distributed by sun. So sun is the controlling deity of our eyes, right? Similarly, mind, the controlling deity of the mind is the moon or moon god. So similarly, all our senses, they have their controlling deities. So they are, just like we discussed these topics in the second canto also, where we discussed Adi Bhautik, Adi Daivik, Adhyatmik. Right? So Adi Bhautik means the material body, Adi Daivik means the demigods, and Adhyatmik means the living entities. Right? So the interactions take place between these three. So every living entity in this material world is in darkness, is in ignorance, because he's thinking that he is this body. Although the living entity is the controller, but he becomes controlled by this material energy. And the energy of the Lord, which influences the living entity to become controller, is called avidya, darkness. That's what is mentioned here. You see, tamasaha. So this darkness of this material energy, this is one of the energy of the Lord called avidya. Right? So avidya is one of the energy of the Lord, because which the living entity is put in darkness, he is put in ignorance of his constitutional position. So all this is influenced by why we think that I am this body, why we are not conscious of the Lord, because of the energy of the Lord, which is called avidya. But again, when the living entity engages in devotional service to the Lord, this avidya energy gets converted into vidya energy. For pure devotees, same avidya energy becomes vidya energy. So avidya energy is Mahamaya and vidya energy is Yogmaya. Right? So this is how this material creation takes place. The creative elements, then the darkness. First, the creative elements they are created. Then there is darkness which covers these all the elements, and then material knowledge gets generated, because of which we start identifying with the body. So conditioned souls are not fools, they are not ignorant, but because of this avidya energy of the Lord, they become ignorant of their original position. Right? And because of this, they are not able to properly utilize their valuable energy. So because of this avidya energy of the Lord, the living entity forgets his relationship with Krishna. Right? So as soon as a living entity wants to misuse his free will, because we all have got freedom from the Lord. So when we misuse our freedom, we are put under the influence of this avidya energy, because of which we enter into forgetfulness. And what is that forgetfulness? We forget our relationship with Krishna. And after that, we are discussing all these different creations, the levels of creations take place. You see?
So all this is influenced by material energy, which is called avidya energy of the Lord. So some other aspects of creation we'll be seeing in the next few sessions. We'll stop here. We'll continue our discussion in the next session. All of you can like the video, comment, subscribe to our YouTube channel. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे कृष्णा। आप सबका बहुत स्वागत आज के भागवत के सत्र में। प्रार्थना के साथ अपने सत्र को प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हमने देखा इस अध्याय में महात्मा विदुर ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे हैं कि काल के बारे में। और हमने देखा अपने पिछले सत्र में कि काल, जो काल शक्ति है भगवान की, वो किस तरह से काम करती है। वो एक रिकॉर्डर की तरह है, जो सब कुछ उसमें रिकॉर्ड होता है, सब कुछ उसमें दर्ज हो जाता है। और इस काल शक्ति के कारण ये जो जड़ जगत है, ये प्रतीत होता है कि इसका विनाश हो रहा है, प्रलय हो रहा है, इसकी सृष्टि हो रही है, लेकिन ये शाश्वत सृष्टि है, भगवान की शाश्वत शक्ति है। और ये काल शक्ति के कारण इसका ये इस तरह से हमें प्रतीत होती है। तो अब हम देखेंगे कि मैत्रेय ऋषि काल शक्ति के बाद किस तरह से सर्ग और विसर्ग होता है उसके बारे में, यानी किस तरह से सृष्टि, ये जगत की सृष्टि होती है, किस तरह से विनाश होता है, वो सारी चीजें अब हम मैत्रेय ऋषि महात्मा विदुर को बताएंगे। तो आज हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे 14वें श्लोक से। तो तीसरे स्कंद के 10वें अध्याय का 14वां श्लोक। सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्य गुणैरस्य त्रिविध प्रतिसंक्रमः। सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्य गुणैरस्य त्रिविध प्रतिसंक्रमः। ट्रांसलेशन, अनुवाद। There are 9 different kinds of creations besides the one which naturally occurs due to the interactions of the modes.
There are three kinds of annihilations due to the eternal time, the material elements and the quality of one's work. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि 9 तरह के 9 आयाम पे सृष्टि होती है वास्तविक सृष्टि के बाद, और 3 तरह का प्रलय आता है काल शक्ति के कारण, भौतिक पदार्थों के कारण और हमारे कर्मों के कारण। तो अब आप देखिए, सर्गो नवविधस्तस्य, तो भगवान जो सृष्टि करते हैं उसको सर्ग कहते हैं, और उसके बाद जब ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं उसको विसर्ग कहते हैं, क्योंकि वो बाद में होती है। वास्तविक सृष्टि तो भगवान करते हैं। तो कह रहे हैं सर्गो नवविधस, तो ये जो सृष्टि है जो भगवान करते हैं ये 9 आयाम पे होती है। इसके 9 आयाम है। और प्राकृतस वैकृतस तो सह, तो प्राकृत मतलब ये 3 ये प्रकृति, ये जो जड़ प्रकृति है वो, और 3 गुणों के मिलने से ये प्रकृति होती है, जिसको सर्ग कहते हैं। तो 9 तरह के हैं। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे, आगे आने वाले जितने भी श्लोक हैं उसमें ये 9 तरह की सृष्टि को हम देखेंगे। 9 आयाम पे किस तरह से अलग अलग आयाम पे सृष्टि होती है उसको हम देखेंगे। और फिर कह रहे हैं कि काल द्रव्य गुणैरस्य त्रिविध प्रतिसंक्रमः, और काल यानी काल शक्ति यानी समय, द्रव्य यानी भौतिक पदार्थ, और गुण यानी 3 गुणों के प्रभाव से त्रिविधा 3 तरह के प्रतिसंक्रमण, प्रतिसंक्रमण का मतलब 3 तरह के प्रलय होते हैं, 3 तरह का विनाश होता है, मतलब 3 आयाम में होता है। तो 9 तरह के की जो सृष्टि है वो तो हम आगे आने वाले श्लोकों में देखेंगे। 3 तरह के जो विनाश है वो सबसे पहला तो जो हम जानते हैं, जब पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है, जो ब्रह्मा जी के आयु जब समाप्त होती है तो पूरा ब्रह्मांड जो है वो भगवान महाविष्णु के शरीर में समाहित हो जाता है। तो वो पहला आयाम है। उसके बाद दूसरा आयाम क्या है विनाश का या प्रलय का, जब आंशिक प्रलय होता है, जो ब्रह्मांड में जो आंशिक प्रलय आता है, जिसमें जितने भी ग्रह हैं और सारे वो गर्भोदक्षाई विष्णु में प्रवेश कर जाते हैं, वो आंशिक प्रलय, वो दूसरा आयाम है प्रलय का। और तीसरा आयाम क्या है, जब हमारे कर्मों के कारण हमारी मृत्यु हो जाती है। तो ये 3 तरह के प्रलय है, 3 तरह का विनाश है। तो अब ये जो 9 तरह की सृष्टि होती है वो किस किस आयाम पे होती है, आइए उसको देखते हैं। 15वां श्लोक, आद्यस्तु महतः सर्गो गुण वैषम्यमात्मनः द्वितीयस्त्वहमो यत्र द्रव्य ज्ञान क्रियोदयः। आद्यस्तु महतः सर्गो गुण वैषम्यमात्मनः द्वितीयस्त्वहमो यत्र द्रव्य ज्ञान क्रियोदयः। ट्रांसलेशन, अनुवाद। Of the 9 creations, the first one is the creation of the Mahat Tattva, the sum total of the material ingredients, wherein the modes interact due to the presence of the Supreme Lord. In the second, the false ego is generated, in which the material ingredients, material knowledge, and material activities arise. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि 9 तरह नवविध सृष्टि में पहला तो है जब महातत्व का सृजन होता है, जिसमें सारे भौतिक पदार्थ का सृजन होता है और गुणों से ये मिलते हैं। दूसरी सृष्टि में हमारा अहंकार का सृजन होता है, जिससे भौतिक पदार्थ, भौतिक ज्ञान और भौतिक कर्म प्रकट होते हैं। अब आप देखिए,
मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि आद्यस्तु महतः सर्गो, आद्यस मतलब पहले, महत जैसा हम सब जानते हैं, इस भाग को हमने पहले भी इसकी चर्चा की हुई है। जब आपको ध्यान होगा, जब हम सृष्टि के बारे में देख रहे थे कि किस प्रकार सृष्टि होती है, उसके बाद अलग अलग आयाम पे कैसे ध्वनि, फिर ध्वनि के कारण हमारी जो श्रवण की शक्ति है उसका सृजन होता है, तो अलग अलग पदार्थों के साथ अलग अलग हमारी इंद्रियां बनती हैं। और हमने देखा था कि हर आयाम पे भगवान की दृष्टि के कारण ये सब होता है। तो ये हम पहले इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ पर उसी का संक्षिप्त में मैत्रेय ऋषि उसको बताएंगे, 9 आयाम जो सृष्टि की है उसके बारे में। तो सबसे पहले बता रहे हैं आद्यस्तु महतः सर्गो। आद्यस मतलब सबसे पहले महत तत्व की सृष्टि होती है, महत तत्व का सृजन होता है। गुण वैषम्यम आत्मना, तो महत तत्व क्या है? तो जो भौतिक जितने भी पदार्थ हैं वो सब एक जगह पे सम्मिलित हो जाते हैं और 3 गुणों का इन पर प्रभाव होने लगता है। ठीक है। उसके बाद द्वितीय स्वहमो यत्र द्रव्य ज्ञान क्रियोदय, और उसके बाद दूसरा दूसरा जो आयाम होता है उसमें अहम यानी त्वहमो यानी अहंकार, अहंकार। और अहंकार के कारण, अब अहंकार का क्या मतलब होता है? अहंकार का मतलब होता है जो हम हैं उसके विपरीत कुछ और सोचना। ये जड़ अहंकार है, और हमारा एक वास्तविक अहंकार भी है कि हम कौन हैं। तो ये जो जड़ अहंकार है उसकी सृष्टि होती है, और उसके कारण भौतिक शरीर, भौतिक ज्ञान और भौतिक क्रिया। ठीक है। तो जो तीन गुण है उसके कारण हमारे शरीर में जीवित होने की भावना हमें प्रतीत होती। ये शरीर वैसे तो मरा हुआ है, मृत है, वो तो आत्मा के कारण चल रहा है, नहीं तो शरीर में ना तो भाव है ना गुण है, कुछ भी नहीं। लेकिन हम सब क्यों सोच रहे हैं कि हम ये शरीर हैं? हमको लगता है शरीर काम कर रहा है। तो ये शरीर के अंदर जीवंत भावना, ये जीवंत जो प्रभाव है वो 3 गुणों के कारण पैदा होता है। 3 गुणों के कारण हम ऐसा सोचते हैं। और जब जीवात्मा इस शरीर के संपर्क में आती है, यानी ये भौतिक जगत के संपर्क में आती है, तो उसकी जो वास्तविक चेतना है, हमारी वास्तविक चेतना क्या है? कि हम ये शरीर नहीं है, हम जीव आत्मा है और भगवान के नित्य दास हैं, उनके नित्य अंश हैं। ये हमारी वास्तविक चेतना है। लेकिन हमारी वास्तविक चेतना अहंकार में बदल जाती है, यानी झूठी चेतना, या आप कह सकते हो दूषित चेतना। तो ये अहंकार में बदल जाती है। हमारा वास्तविक अहंकार क्या है? कि हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा है, जीवात्मा है और भगवान के नित्य अंश हैं। ये हमारी वास्तविक चेतना है। लेकिन ये हमारी वास्तविक चेतना जो है वो झूठी चेतना, यानी गलत चेतना, जिसे अहंकार कहते हैं, उसमें बदल जाती है। जिस तरह से दूध जो है वो किसी द्रव्य के मिश्रण से वो दही में बदल जाता है, उसी तरह हमारी वास्तविक चेतना जैसे ही हम इस जगत के संपर्क में आते हैं दूषित चेतना बन जाती है, जिसको अहंकार कहते हैं। तो हम जो हैं वो छोड़कर कुछ और सोचने लग जाते हैं अपने बारे में, कि हम ये शरीर नहीं है, हम जीव आत्मा है, भगवान के अंश छोड़ के हम ये सोचने लगते हैं कि मैं ये शरीर हूं। तो ये शरीर के साथ जो हमारा संपर्क है ये अहंकार के कारण होता है। तो अहंकार का, इस जगत में हमारे वास का मुख्य कारण है अहंकार,
क्योंकि अहंकार के कारण हम सोचने लगते हैं कि मैं ये शरीर हूं, जबकि हम नहीं हैं। और जब हम ये सोचने लगते हैं कि हम ये शरीर हैं, तो फिर देखो आप, ये देखो अब श्लोक में क्या है, द्रव्य ज्ञान क्रिया। तो फिर जब हम ये सोचने लगते हैं कि मैं ये शरीर हूं, तो फिर हम सोचने लगते हैं कि मैं अमेरिकन हूं, मैं इंडियन हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं। तो ये शरीर के आवरण में हम फंस जाते हैं। तो हमारी जो वास्तविक चेतना है वो बदल जाती है। हम इस शरीर से स्वयं को जोड़ देते हैं और फिर हमारा भौतिक ज्ञान आ जाता है, भौतिक ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो हम भौतिक ज्ञान में फंस जाते हैं। वास्तविक ज्ञान तो हम भूल गए, तो हम भौतिक ज्ञान फिर प्रकट होता है, और जिसके कारण भौतिक क्रिया हम करने लगते हैं। खाना पीना, खाना पीना, जो भी हम कर रहे हैं, बच्चे पैदा करना, अपना बचाव करना, ये सोचना कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये सारी चीजें इस अहंकार के कारण और इस शरीर के द्वारा संबंध के कारण ये सब प्रकट होता है। तो ये दो तरह की सृष्टि तो हमने देखी। अब आइए देखते हैं तीसरी और चौथी। भूत सर्ग, 16वां श्लोक। भूत सर्गस्तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्य शक्तिमान चतुर्थेन्द्रिय सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मक। भूत सर्गस्तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्य शक्तिमान चतुर्थ इंद्रिय सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मक। ट्रांसलेशन, अनुवाद। The sense perceptions are created in the third creation, and from these the elements are generated. The fourth creation, the creation of knowledge and of working capacity. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो हमारी इंद्रियों का सृजन तीसरे सर्ग में होता है, तीसरी सृष्टि में होता है, जिससे भौतिक इंद्रियां प्रकट होती हैं, और चौथी सृष्टि में ज्ञान और कर्म प्रकट होते हैं। तो जो दूसरी सृष्टि है उसी से ये तीसरी और चौथी भी संबंधित है, जिसमें मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि भूत सर्ग तृतीयस्तु। तो तीसरी जो सृष्टि है उसमें भूत सर्ग, भूत मतलब हमारे भौतिक शरीर और भौतिक इंद्रियां, तन मात्रो द्रव्य शक्तिमान। तो ये द्रव्य मतलब ये शरीर के साथ हमारी इंद्रियां और ये सारे प्रकट होते हैं। और फिर चतुर्थ इंद्रिय सर्गो, फिर चौथी सृष्टि में इंद्रिय सर्गो, यानी हमारी इंद्रियों के विषय और ज्ञान क्रिया, भौतिक ज्ञान और भौतिक क्रिया, ये सारी चीजों का संबंध स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से तीसरी और चौथी सृष्टि होती है। अब आइए देखते हैं पांचवी और छठी सृष्टि कैसी होती है। 17वां श्लोक। वैकारिको देव सर्ग पंचमो यन्मयं मनः षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्त्व बुद्धिकृतः परमो। वैकारिको देव सर्ग पंचमो यन्मयं मनः षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्त्व बुद्धिकृतः परमो। Translation. The fifth creation is that of the controlling deities by the interaction of the modes of goodness, of which the mind is the sum total. The sixth creation is the ignorant darkness of the living entity by which the master acts as a fool. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो पांचवी सृष्टि है जिसमें देवता लोग प्रकट होते हैं सत्वगुण के प्रभाव से और मन के प्रभाव से, और छठी सृष्टि में जीव अविद्या के प्रभाव में आ जाता है और वो इस जगत का दास बन जाता है। आप देखिए, तो मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि वैकारिको देव सर्ग पंचमो। तो पांचवी जो सृष्टि है उसमें देवताओं, तो जब जीवों का शरीर बन गया और जीव
सारे जीव जो हैं इस जगत में आ जाते हैं, तो फिर कुछ जीव हैं जो नियंत्रक होते हैं और कुछ जीव नियंत्रित होते हैं। इसको हमने दूसरे स्कंद में भी देखा था, अगर आप सबको ध्यान हो। आदि भूतक, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, ये तीन आयाम में, इस तीन आयाम को हमने देखा था, जिसमें हमने देखा था कि आदि भौतिक मतलब ये शरीर, आध्यात्मिक मतलब जीव, मतलब नियंत्रित जीव, और आदि दैविक मतलब नियंत्रक जीव। तो शरीर को किस तरह से आदिदैविक जीव, आध्यात्मिक जीव को शरीर के माध्यम से कैसे नियंत्रित करते हैं, वो भी हमने देखा था। जैसे हमारी जो नेत्र हैं, अब नेत्र कैसे काम करती हैं? प्रकाश के कारण। और प्रकाश का स्रोत कौन है सृष्टि में? सूर्य। तो सूर्य देवता हमारे नेत्रों के नियंत्रक हैं, वो नियंत्रित करते हैं हमारे नेत्रों को, इसके कंट्रोलर हैं। उसी तरह से हमारा मन जो है वो मून यानी चंद्र देवता के द्वारा नियंत्रित होता है। तो ऐसे अलग अलग इंद्रियों को अलग अलग देवता हम जो है वो नियंत्रित करते हैं। इसीलिए जो पंचमा यानी पांचवी जो सृष्टि है वो देव सर्ग, उसमें देवता लोग और जीव दोनों में विभाजन हो जाता है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? षष्ठस्तु तमसः सर्गो, छठी जो प्रकृति है उसमें तमसः यानी तामसिक गुण इस सृष्टि में प्रवेश करता है। तो विष्णु भक्त भवे दैव आसुरस तद्विपर्ययः, विष्णु के भक्त, भगवान विष्णु के भक्त को देवता कहते हैं, और जो भक्त नहीं होते उन्हें असुर कहते हैं शास्त्रों के अनुसार। तो अब इस जगत में जितने भी जीव हैं, चाहे वो देवता हो चाहे वो साधारण जीव हो, सभी के अंदर ये भाव होता है कि हम इस सृष्टि को चला रहे हैं, हम ये शरीर को चला रहे हैं, ये शरीर मैं हूं। ठीक है। अब ये कैसे होता है? हम अपनी वास्तविक स्थिति को भूलकर इस शरीर को कैसे, हम शरीर से अपना संबंध बना लेते हैं? ये वास्तविक स्थिति हम भूलते कैसे हैं? तो वो होता है भगवान की अविद्या शक्ति से, जिसको हम महामाया भी कहते हैं। तो ये जो अविद्या शक्ति है भगवान की, इसके कारण जो जीव है वो अपना भगवान से संबंध को भूल जाता है, अविद्या में आ जाता है। और वो ये जब भूल जाता है, जब हम भगवान से विमुख होना चाहते हैं आध्यात्मिक जगत में, तो हमें इस अविद्या शक्ति के संपर्क में आना पड़ता है। तो हम इस जड़ जगत में प्रवेश करते हैं, और जड़ जगत में प्रवेश करते ही आप देख रहे हैं ये अलग अलग सृष्टि होती है, और हम अविद्या शक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं। ठीक है। तो अविद्या शक्ति के प्रभाव में आकर हम ये भूल जाते हैं कि हम भगवान के दिव्य शाश्वत अंश और प्रेमी हैं, या भूल जाते हैं। और हम इस शरीर से अपना संबंध हमारा बन जाता है, हम ये सोचने लगते हैं कि मैं ये शरीर हूं। लेकिन ये जो अविद्या शक्ति है ये उन पर काम करती है जो भगवान को भूल गए हैं। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, यही अविद्या शक्ति उनके लिए विद्या शक्ति बन जाती है। जैसे शुद्ध भक्त जो होते हैं उनके लिए महामाया योग माया का काम करती है। तो इसीलिए जो जड़ प्रकृति है ये पहले शरीर बनता है, फिर हम अंधकार से ढक जाते हैं, अंधकार मतलब अविद्या शक्ति से ढक जाते हैं, महामाया के द्वारा ढक जाते हैं। और तीसरे आयाम में अगर देखें तो हमें ये भौतिक ज्ञान प्रबल हो जाता है। तो अविद्या शक्ति के कारण हमारा वास्तविक ज्ञान हम भूल जाते हैं, और ये भौतिक ज्ञान प्रबल हो जाता है, हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं। और इस कारण मूर्खता पूर्वक मनुष्य काम करना शुरू कर देता है,
उसको ये लगने लगता है कि मैं ये शरीर हूं, इस शरीर का निर्वहन करना, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, अपना बचाव करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। और इस कारण मनुष्य अपने जो जीव है वो अपने वास्तविक स्थिति को भूलकर मूर्तापूर्वक काम करना प्रारंभ कर देता है। तो अविद्या शक्ति के कारण हम अपना भगवान से संबंध भूल जाते हैं, क्योंकि हम वो भूलना चाह रहे थे, हम भगवान से अलग होना चाह रहे थे। अपनी जो भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी है, जब हम उसका दुष्प्रयोग करते हैं तो भगवान से अलग होना पड़ता है। अलग होते ही हम इस अविद्या शक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं, और फिर इस सृष्टि को आप देख ही रहे हैं किस तरह से ये सृष्टि बनती है, और हम पूर्णतः अपनी वास्तविक स्थिति से भूलकर एक माया यानी एक गलत स्थिति में हम पहुंच जाते हैं। तो वो यहाँ पे अलग अलग तरह की सृष्टि, अलग अलग आयाम पे हम देख रहे हैं। तो और अब 3 तरह की सृष्टि किस तरह से होती है वो हम अगले सत्र में देखेंगे। आज का सत्र यहीं हम विराम देंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जितना हो सके शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।